Hare Krishna, Jai Jagannath. So welcome you all. This is the fifth part of our series of discussion regarding the Odisha Civil Service Prelims 2020-21, last year's actually prelims analysis. So এটা তোমার जो upcoming OAS Prelims ଅଛି OAS exam ଅଛି ତା ପାଇଁ ବହୁତ helpful ହେବ. तो already ଆମେ 20টা questions ଚାरଟା part ରେ discuss କରି ସାରିଛୁ. ଗୋଟେ part ରେ 5ଟା question discussion କରୁଛୁ. ତ every option ରେ कोन कोन हि परिबो like questions सेटा भी हमें properly discuss करछु so that a related जे किछि भी questions আছে so it will be helpful for you. Okay, so हम आज start करें question number 21. Okay, question 21, which is not a synthetic polymer है ना. तो या पूर्व तुम वीडियो देखि परिबो ऑलरेडी चारटा पार्ट हे सारछ. ओके, व्हिच इज नॉट ए सिंथेटिक पॉलीमर. क्वेश्चन नंबर 21. सिंथेटिक तुम जानछो नेचुरल एंड सिंथेटिक. सिंथेटिक माने तुम आर्टिफिशियली बना हेछि, आर्टिफिशियली कैन आल्सो. ओके, पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, नायलॉन, पॉलीस्टायरीन, रेजिन. ओके, तो कुछ कोडा सिंथेटिक पॉलीमर नुहे माने कोन कोडा नेचुरल पॉलीमर हला. तो पीवीसी, नायलॉन, पॉलीस्टायरीन सब कोन एटा सब सिंथेटिक पॉलीमर एंड रेजिन इज ए नेचुरल पॉलीमर. तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. तो व्हाट इज पीवीसी हमें जेमने हम कहतली कि सब ऑप्शन को डिटेल भी जानना दरकार सो दैट ई रिलेटेड भी क्वेश्चन आसी पारे तो तुम जदी मिस न होए. ओके, पीवीसी रो फुल फॉर्म होची पॉलीविनाइल क्लोराइड. पॉलीविनाइल क्लोराइड रिमेंबर दिस पीवीसी हैला. तो तुम निहाती सुनिथिबो पीवीसी पाइप्स वगैरह बहुत यूज हुए. सो इट इज अ पॉलीमर व्हिच इज मेड फ्रॉम विनाइल क्लोराइड. व्हिच इज मेड फ्रॉम व्हाट विनाइल क्लोराइड. तो बहुत बड़ा अच्छी पॉली माने बहुत बड़ा विनाइल क्लोराइड मिसाई जे पॉलीमराइजेशन टाइप दैट इज आल्सो नाम इज पॉलीविनाइल क्लोराइड. तो पॉलीमराइजेशन टेक्नोलॉजी रे ताको बना हेछि. तो गोटे पॉलीमर एटा. सो पीवीसी इज बीइंग यूज्ड इन वैरायटी प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग रेनकोट. रेनकोट रे यूज हुए, वायर्स रे यूज हुए. बेसिकली वायर ऊपर जो कोटिंग का थाए हला ताको बेसिकली मॉइस्चर वगैरह जो प्रोटेक्ट करिया पई रेनकोट रे भी तमरो वाटर जो प्रोटेक्शन पई यूज हुए है ना. पाइप्स, पीवीसी पाइप तमरो जो वायरिंग वगैरह रे यूज है, जो हमें बाथरूम में जो पानी आछे जो लागि था पीवीसी पाइप्स कहै ताको राइट. ता फुल फॉर्म होय व्हाट पॉलीविनाइल क्लोराइड. बॉटल्स यूज हुए, क्रेडिट कार्ड्स, फ्लोरिंग एंड एक्सेट्रा. सिंस इट रेजिस्ट वाटर तो यार मेन काम कोन रेजिस्ट वाटर एंड फायर. तो वाटर रेजिस्टेंस भी था, फायर रेजिस्टेंस भी था. से पे ऑलरेडी वायरिंग में यूज होची राइट. It is useful in producing many products. PVC is a thermoplastic polymer. This is what a thermoplastic polymer which undergoes melting on heating and solidification and cooling with chemical formula CH2 double bond CHCl. Polyvinyl chloride तो Cl रहेगा chlorine. तो CH2 तो इसके दीटा C अछि तो C2H3Cl. C2H3Cl is the formula. तारो बहुतरा एक्चुअली पॉलीमर यार एटा मोनोमर तो एबा N अछि माने बहुतरा जोड़ी 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 पॉलीमराइजेशन है कि पॉलीविनाइल क्लोराइड बना हुए. तो बेसिकली प्रॉपर्टी कोन इट रेजिस्ट वाटर एंड फायर एंड इट इज अ थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर. आमे काली भी गोटे पढिथिलु डिस्कशन रे गोटे ऑप्शन थिला जोडे कि बेसिकली तमरो कोन पा यूज हुए. इट इज यूज्ड फॉर योर रेनकोट. जो कोन थिला गोटे रेनकोट पे यूज हुए ना. देखिए कोन हडा थिला आई एम आल्सो नॉट रिमेंबर ऑप्शन थिला. no. Okay, we'll study that later. खाली पढनथले एटा बोले मी गोटे डिस्कशन करथली. Okay, so मैडम लिखले polyvinyl chloride. A manufacturing method of PVC. तो PVC की मैन्युफैक्चरिंग केमि करा जाय. Polyvinyl chloride is synthesized by polymerization of vinyl monomer. तो vinyl formula में लिखले होती C2H3Cl and vinyl VCM the कोच. Okay, vinyl monomer is synthesized from the chlorination of ethylene. तो ethylene रो chlorination रो बना होची तोरो this thing vinyl monomer. The resulting ethylene dichloride undergoes pyrolysis in a cracking device. Okay, don't have to remember, just remember करो this तारो polyvinyl chloride रो बना हुए और तारो मेनली प्रॉपर्टी कौन था बेसिकली. नेक्स्ट मूविंग टू ओके नायलॉन. तो तारो गोटे ऑप्शन था नायलॉन. तो नायलॉन मिशन हम ଟିକେ बोलसे स्टडी करिया. The term nylon term points towards a polymer family known as linear polyamides. What is this? Linear polyamides. There are two approaches to making nylon for fiber applications. तो nylon तो समझ देखिथियो nylon fiber. तो एटा गोटे भी polymer जोडा कि बेसिकली ताको गोटे फैमिली रो आछि जोडा कि linear polyamides को होछि.
So dita approach अछि jotre ki basically to making nylon for fiber application. In the first approach, the molecules that consist of an acidic group, so COOH, eta acid group tome jani thibo, right? So basically first approach kuch ki the molecules that consist of an acid group on every end react with molecules that contain amino groups at each end. होला तो acid group amino group सहित reaction करके nylon बने परिबो. Amino group रो formula NH2, acid group रो COH. The resulting nylon gets a name based on the number of carbon atoms that separate two amines. The number of carbon atoms that separate two amines and two acidic groups. तो amine and acid group को जो जति की number carbon atom तक separate कोचे से अनुसार तारो ना आसे था. So hence nylon 6 is widely used as fibers made from adipic acid and hexamethylene diamine. Okay. So एते बहुत डिटेल मन रखा दरकार nylon 6 is मनको basically गोटे acidic group आ गोटे amine group सहित reaction हुए. The salt which is formed by two compounds is known as nylon, that has an exact ratio of 1:1 acid, ratio of 1:1 acid to base. तो तमे जानथो acid and base reaction करने गोटे salt हुए तो से सेटा कहूची तो ये जो adipic acid और hexamethylamine एगुडा ताको reaction हला परे गोटे nylon salt हबो. This salt is dried and then heated under vacuum to remove water and form the polymer. तो ए salt ताको heat करा जिवो vacuum रे तो सेटा water को remove करा जिवो and गोटे polymer हे जिवो. I would approach a compound that contains an amine at one end and acid at the other are polymerized to produce a chain with repeating units of this. Okay, the nylon is referred to as a nylon 6 if n is equal to 5, which is another common form of this polymer. The commercial production of nylon 6 starts with caprolactam that use an open ring polymerization. So this is some technicalities. Okay, in both the approaches, the polyamide is melted and drawn after cooling to obtain the desired properties of every intended use. So nylon use कौन हुए? Clothing, shirts use हुए, foundation, garments, lingerie, raincoats, underwear, swimwear वगैरह. Industrial uses conveyor and seat belt use हुए, parachutes use हुए, airbags, nets, ropes, tarpaulins. Basically वो water resistant था. जैसे कि हमने देखी लो polyvinyl chloride. This is also water resistant. टेंट रो यूज हुए. It also used to make a fish net जो nylon जोड़ा की basically dissolve होने तो मैं जानते हो आजकल बहुत basically this fish net pollution तो बड़ा समुद्र रे होची basically because of fishing and all. सेट रही होची. It is also used as plastic in manufacturing machine parts. Okay, recently our option thila a gas leak has affected five villages in Visakhapatnam in Andhra Pradesh. So basically, I was saying gas leak has affected 5 villages in Visakhapatnam, Andhra Pradesh. This source of gas leak was a styrene plant owned by South Korean Electronics Gas LG located in India. So basically, last year data hitla, but gas leak hitla Visakhapatnam re. So what styrene plant hitla, जे तार owner कितला South Korean Electronics giant LG. Life is good, right? LG, South Korean company, LG something for जानती हो, तार वो styrene plant ला विशाखापट्टनम रे. This possible reason for gas leak is stagnation and changes in temperature. Basically, सेटा कौन? Because of lockdown, बहुत दिन पर्यंत सेटा लॉक थिला styrene plant टा, तो सेटी कौन हला temperature जोगु lockdown जोगु सेटा बहुत दिन हला थिला, तो temperature कारण तो कौन हला सेटी basically निया लाग गला. तो सेटा कौन हला inside the storage tank that could have resulted in auto polymerization, chemical reaction and vaporization of the styrene. तो जो styrene थिला तो auto polymerization की polystyrene हे गला. तो ताजो कौन हला chemical reaction हला तो तेनो सेडी गुडे ट्रेजेडी हेइतला. सो स्टायरीन इट इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड. स्टायरीन का फार्मूला कोन एटा मन रख दियो, एटा बहुत इंपोर्टेंट C8H8 बिकॉज़ एटा करंट अफेयर्स रिलेटेड यू कैन से. तो स्टायरीन फुल फॉर्म कोन हला, सॉरी केमिकल फार्मूला C8H8 एंड इट इज अ डेरिवेशन ऑफ बेंजीन. बेंजीन तो जानते हो C6H6. It is stored in factories as a liquid but evaporates easily and has to be kept at temperature under 20 degrees Celsius. So basically एटा कोन होय 10 to 20 degrees Celsius तो तळे रखिया पड़े जनरली हला. एटा गोटे फैक्ट्री लिक्विड हिसाब से स्टोर करा जाय, किंतु कोन हला बहुत दिन हला स्टोर कितला बोले ऑटो पॉलीमराइजेशन हेगला टेंपरेचर बढ़िबा जोगु. Sources: styrene is found in vehicle exhaust, cigarette smoke, in natural foods like fruits and vegetables. Uses: it is a flammable liquid that is used in manufacturing of polystyrene plastics, fiberglass, rubber and latex. Risk of exposure: short-term exposure, it can result in respiratory problems, irritation in the eyes, irritation in the mucous membrane and gastrointestinal issues. So short-term exposure जो होगा
Long term exposure, it could drastically affect the central nervous system, CNS, and lead to other related problems like peripheral neuropathy. So neurological problem भी देखा पड़ेगा. तो था formula टा मन रखलो C8H8 polystyrene रो. Okay. However, there is no sufficient evidence of association between styrene exposure and increased risk of leukemia and lymphoma. Leukemia तो जानते हो basically blood cancer, blood RBC परिमाण बढ़ जाए. Okay, how do you achieve? Let's see what is this. In polymer chemistry and material science, resin out option thila जोड़ा के हम देखलो सेटा कोन natural polymer no, that is a natural polymer जोड़ा कि क्वेश्चन में पचारतला. In polymer chemistry and material science, resin is a solid or highly viscous substance of plant or synthetic origin that is typically convertible into polymers. है ना जोड़ा कि plant origin, that's why plant origin. Okay. Resin is a solid or highly viscous substance of plant or synthetic origin. Plant origin भी पारियो, synthetic origin भी पारियो. Resins are usually mixtures of organic compounds. Plants secrete resin. So plant or assume natural origin for their protective benefits in response to injury. है ना? तो basically जब गोटे गच्छ बड़ गच्छ जे तुमे ताको तार जो बाहर लेयर था ताको जदी तुमे उखाड़ी दबो सेठी गोटे जो अठा टाइप रो बाहर सेटा रेजिन कहै जाय. जोटा कि झुणा वगैरह भी तो रेजिन रो पार्ट. झुणा कोद्रो आसे साल ट्री रो आसे. तो रेजिन protects the plant from insects and pathogens. The resin protects the plants from insects and pathogens. से पे झुणा धुआं भी दे जा basically mosquito repellent बड़े यूज है, right? So most plant resins are composed of terpenes. तो resin जो था तारो chemical compound कोन terpene. Resins confound a wide range of herbivores, insects and or pathogens. While the volatile phenolic compounds may attract benefactors such as parasitoids or predators of the herbivores that attack the plant. तो बेसिकली फास्ट तो कहला कि हर्बीवोर्स इंसेक्ट्स पैथोजन को से कंफाउंड करे किंतु जो वोलेटाइल फेनोलिक कंपाउंड्स है से अट्रैक्ट भी कर पारे. रबर, नेचुरल रबर इज अ पॉलीमर ऑफ व्हाट 2 methyl buta 1,3 diene. Natural rubber is a polymer of what 2 methyl buta 1,3 diene. This polymer is popular known as isoprene. तो रबर रो जो बेसिकली रबर को जो हम नेचुरल कहि दोचे सेटा को बेसिकली सेटा कोन आइसोप्रेन. आइसोप्रेन इज अ पॉलीमर ऑफ व्हाट 2 methyl buta 1,3 diene. Okay, जेटा एमटी देखिलु जो रेजिन टा टर्पेन थिला रबर हला आइसोप्रेन. नेचुरल रबर इज ऑब्टेन्ड. रबर ते तुम जानथो जेटा कि मलेशिया वगैरह बहुत हुए मेनली तुमरो ट्रॉपिकल रीजन रे. बेसिकली सेटा गोटे एटा कोन कहि पाइबो तुम गोटे प्लांटेशन अब देखन से या प्लांटेशन क्रॉप को आजो. नेचुरल रबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रबर ट्री इन द फॉर्म ऑफ लैटेक्स. हला या तुम वीडियो देखि पारियो गोटे एक्चुअली गोटे छेद कर दे जे कनेक्ट कलेक्शन हुए लाटेक्स रो हला जोड़ा कि मिल्की जूस भलिया थाए व्हिच इज अ मिल्की जूस ऑफ द रबर प्लांट. और सेहितरो फाइनली रबर को प्रोड्यूस करा जाय. ओके, क्वेश्चन नंबर 22. बी स्टिंग कॉजेस सीवियर पेन एंड बर्निंग सेंसेशन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ व्हाट. तुम जानथि हो जे महुमाछी तले कामुडी बिंधे जणको तो सेत्रे बेसिकली जो पेन हुए बहुत बर्निंग सेंसेशन है सेटा कोन पाई हुए को तार सेते कोन थाए एसिटिक एसिड थाए, सल्फ्यूरिक एसिड थाए, साइट्रिक एसिड थाए कि मिथानोइक एसिड थाए. तो आंसर इज मिथानोइक एसिड और फॉर्मिक एसिड. So both methanoic acid and formic acid will be the answer. So option D is the correct answer. Formic acid or methanoic acid is present in honey bee sting. Even pimpudi kamole with this thing comes. Okay. Formic acid or methanoic acid is present in honey bee sting. Honey bee जो मतलब बिंद है क्षेत्र था इटा which is used for chemo communication. Chemical communication, chemo communication का होचे. It has so many chemicals like histamine. सहित histamine भी यदि ऑप्शन था पर हेटा हम लिख पारो. तो से जो फॉर्मिक एसिड मेथानोइक एसिड जो था से पे केमिकल रिएक्शन हुए तो से माने तो से हिस्टामिन भी था जे कि एलर्जी करे बेसी में सेठी कोन होय फुली जाए. यदि एलर्जी हेले कोन होय छै तो से रिएक्शन होय से पे तो जोडी बिंदी था सेठी फुली जाए. हिस्टामिन एंड हाइलुरिनेडेज. Okay, remember these names also. Very important. Histamine protein होता है basically chemical protein. Histamine and hyaluronidase. तो ये वाला जो को कौन हुए तुम्हारा reaction हुए. The venom of the honey bee contains तो जो venom say the same thing. Methanoic acid, formic acid. Venom contains histamine, mast cell degranulating peptide, melittin, phospholipase A2, hyaluronidase, acid phosphatase. तो बहुत नाम है जोड़ा एक्चुअली हाईलाइट है. रिमेंबर दिस नेम्स. बेसिकली हम एडी ऑप्शन क्वेश्चन तो पता चला फॉर्मिक एसिड वगैरह और सेते कौन था भितर हिस्टामिन भी था, हाइलुरिनेडेज भी था हला जोड़ा कि बेसिकली रिएक्शन करे. मेलिटिन,
phospholipase A2 so protein गुड़ा the effect of bee venom can be neutralized bee venom को neutralize करने पे कौन करा जाए baking soda use करा जाए and neem leaves and garlic चला तो remember this thing bee venom को माने रिएक्शन को काटिया पाई न्यूट्रलाइज करने पे कौन यूज है baking soda neem leaves and garlic even तुम्हारा honey को भी यदि तुम्हें मारियो सेटा भी ठीक है जी honey bee माने honey सही honey उड़ा के bee तो sting कला honey तो तुम ठीक है honey bees will actively seek out sting honey bees will actively seek out and sting when they perceive the hive to be threatened often being alerted to this by the release of attack pheromones तो तांकर गोटे जेतो से भावंती कि हमको अटैक हे गला तो सेटो तांकर गोटे हार्मोन सिक्रेट है जोटा कि फेरोमोन हला तो तापर से माने बिनहते जोते कि फॉर्मिक एसिड एंड मेथानोइक एसिड थाए और ता भीतर कोन था हिस्टामिन हाइलुरिनाडेज मेलिटिन फॉस्फोलिपेज एंड ऑल ड्रोन बीज द मेल्स आर लार्जर एंड डू नॉट हैव स्टिंगर्स तो बेसिकली जे माने बिनहते से माने मेल भी थांती नि से फीमेल बांध थांती बेसिकली गोटे रानी मुह अछि था जे कि भीतर थाए ताकू प्रोटेक्ट ताकू घेरी की थांती हला मेल बीज से माने जानती नि बाकी फीमेल बीज हला वर्कर बीज एंड क्वींस क्वीन तो गोटे थाए गोटे बसारे बाकी जो थांती से माने वर्कर बीज से फीमेल ही थांती से माने बाहर को जानती बेसिकली हनी कलेक्ट करिया पाए okay and the female bees are the only ones that can sting and their stinger is a modified ovipositor so remember these points question number 23 albinism is caused due to the deficiency of what albinism जानते हो जो बेसिकली जो caucasoid race लोक मान को बेसिकली albino भी कहा जाए बेसिकली स्त्री तांकर गोटे गोटे जिंसो एब्सेंट थाए मेलानिन और गोटे थाए गोटे पिगमेंट सेटे एब्सेंट थाए बट एटी मेलानिन ऑप्शन है नाही हार्मोन एंजाइम विटामिन मेटल इसो देछि तो मेटल तो हबनी विटामिन हबनी तो एंजाइम हार्मोन भीतर गोटे ऑप्शन हवा दरकार जोडा कि ऑप्शन तो मेलानिन जो थाए बाकी एटी कोन से कहछि किंतु अल्बिनिज्म डिजीज कोता कहछि तो हियर एंजाइम इज द आंसर लेट्स सी व्हाट इज द एक्सप्लेनेशन ओके अल्बिनिज्म बेसिकली जोडी मेलानिन अधिका थाए समान को स्किन जनरली ब्लैक थाए बाकी albinism माने बेसिकली मेलानिन एब्सेंट थाए सो albinism results from inheritance of recessive gene alleles and is known to affect all vertebrates including humans so albinism results from inheritance of recessive gene alleles okay is known to affect all vertebrates including humans it is due to absence or defect of tyrosinase so what is saying तो ये जो albinism रोगटा हुए सेटा why it is happened because of absence of tyrosinase tyrosinase is a copper containing enzyme that's why the answer is enzyme तो कौन absent रेडी होची tyrosinase which is enzyme involved in the production of melanin तो both this names you have to remember melanin generally समझते जानथांदी बाकी जो tyrosinase generally जानि नथांदी पिला माने स्कूल ले पढिथलु melanin right so option रेडी melanin ही नाही हार्मोन दे देची enzyme दे देची but here answer is what enzyme so tyrosinase यदि absent थिवो tyrosinase गोटे कॉपर कंटेनिंग एंजाइम जे की बेसिकली कोन करे मेलानिन प्रोडक्शन करे यदि सेटा टायरोसिनेज एब्सेंट थिबो तो मेलानिन प्रोडक्शन होबनी यदि न होबो त कोन हिजो अल्बिनो माने अल्बिनिज्म रोग हिजो बेसिकली व्हाइट स्किन उडा व्हाइट थाए जोते कि जता सन सूर्य किरण बहुत पड़े तो ताको सेठी सन बर्न जल्दी हो जाए बट यदि ब्लैक स्किन थिबो सेटे सेहि पय हम देखियो अफ्रीकन कंट्रीज जनरली लोक मान कोन ब्लैक थांदी सो दैट ताको बहुत माने कोन सनलाइट पड़ले भी एते प्रॉब्लम होय नाही ओके it is the opposite of melanism unlike humans other animals have multiple pigments and for this albinism is considered to be a hereditary condition characterized by the absence of melanin in particular in the eyes skin hair scales feathers or cuticle while an organism with complete absence of melanin is called albino से पे तुम देखियो कि गोरा लोक मान जनरली ठंडा एरिया थाने बिकॉज़ इट इज हेरिडिटरी इट इज से गोटे रिसेसिव एलेली थाए एलेली माने गोटे जीन दुई भागर विभक्त थाए गोटे माने गोटे डोमिनेंट एलेली थाए गोटे रिसेसिव एलेली थाए बट बिकॉज़ जोडी जो डोमिनेंट एब्सेंट थिबो रिसेसिव एलेली जगो तम एटा हिजो तो तांको पिला माने भी वंशज कोन व्हाइट स्किन रासिए so an organism with an only administered amount of melanin is described as okay while an organism with complete absence of melanin यदि completely absent हो melanin ताको हजो albino but यदि गोटे organism with only a diminished amount of melanin यदि किछि melanin थिबो ताको हजो leucistic or albinoid okay question number 24 okay that's it in ballpoint pens dyes used are हमें पेन यूज करू जो मार्किंग करे पे बॉल पॉइंट पेन जेल पेन तो बेसिकली क्वेश्चन पचार जे बॉल पॉइंट पेन रे जो डाइज यूज हुए सेटा कोन थाए
water based, alcohol based, glycerin based or oil based. So answer is what? Both D and B like answer अच्छी like oil based भी है पारियो, alcohol based भी है पारियो. Okay, but let's see what is the explanation why both can be the answers. But correct answer तो तुम OPSC provide करो. So ballpoint pen ink is normally a paste containing around 25 to 40% dye. So ballpoint pen what is saying ink is normally a paste containing तो जो ink अच्छी ballpoint pen ink रे sorry ballpoint pen ink तो सेटा गोटे कोन पेस्ट अच्छी जोते कि 25 to 40% कोन था dye था. The dyes are suspended in a mixture of solvents and fatty acid. तो सेटा को dye माने बेसिकली कलर टा को गोटे solvent एक लिक्विड रे और फैटी एसिड मिक्सचर रे कोन करा जाय ताको पका जाय. द मोस्ट कॉमन ऑफ द सॉल्वेंट्स आर बेंजाइल अल्कोहल. तो से जो सॉल्वेंट यूज हुए एटा कोन यूज हुए बेंजाइल अल्कोहल और फेनॉक्सी इथेनॉल. तो डेटा को जो सॉल्वेंट एटा कोन अल्कोहल देखाउ छु बेंजाइल अल्कोहल और फेनॉक्सी इथेनॉल which mix with the dyes and oils. तो oil भी ये आंसर ही परियो because सेतरे oil भी मिसा होची. but क्वेश्चन कोन पचार छै dyes used are what बेसिकली सॉल्वेंट रहला अल्कोहल हे गला और सेतरे मिसा होची ऑयल बाकी डाइज कोन से पचार छ. ओके, to create a smooth paste that dries quickly. The drying time of the ink varies depending upon the viscosity of the ink and the diameter of the ball. So the drying time of the ink varies depending जो हमें लिखला पर सेटा जो ड्राई हो जाय जेल टा टिके लेट रे ड्राई हो राइट से पे मिटी जाय बाकी बॉल पेन टिके जल्दी बॉल इंक टा जल्दी ड्राई हो जाय. So the dye used in blue and black ballpoint pens are what? Basic dyes based on triaryl methane and acid dyes derived from diazo compounds or what is this? Thalcocyanine. Okay, से कुछ but question पता चला कौन dyes used है कौन solvent हमें देख लो alcohol था और थोड़ा mix हुआ oils बाकी dye यहाँ पे एटी लिखा है जी कौन explanation में it can be base derived or acid derived जोड़े का ऑप्शन रही नहीं. Okay, so common dyes in blue or and black ink are Prussian blue. So it is the basic dye is based on what triaryl methane and acid dye is derived from what diazo compounds or something of thalcocyanine. So common dyes in blue and black ink are what Prussian blue, Victoria blue, methyl violet, crystal violet and thalcocyanine blue. The dye eosin is commonly used for red ink. Okay, the inks are resistant to water after drying. Dry होला पर resistant to water but can be defaced by certain solvents which include acetone and various alcohols. Roller ball pens or roll pens are pens which use ballpoint writing mechanisms with water-based liquid or gelled ink, as opposed to oil-based viscous inks found in ballpoint pens. So basically, this is the thing. तो कोची के रोल पेन और रोलर बॉल पेन में कौन कोची की वाटर बेस्ड लिक्विड और जेल इंक पे यूज होता है. वाटर बेस्ड लिक्विड बाकी बॉल पॉइंट ऑयल बेस्ड लिक्विड यूज होता है. सो दैट्स व्हाई इट्स आंसर मे बी ऑयल बेस्ड में ही पारे अल्कोहल बेस्ड में ही पारे बाकी वाटर बेस्ड तो होबनी कैंसल ग्लिसरीन होबनी बाकी ऑप्शन 8 तो एसिड जोड़ा की बेसिकली डाई से पचरता है एसिड और डाई बेसिक डाई पारे बाकी तो ऑप्शन नहीं. सो यू रिमेंबर दिस थिंग्स. ओके, so coming to the final question of this video part 5, which one of the following colors is least deviated by the glass prism? बाकी glass prism तो जानते हो तो गोटे natural light पड़े white light सेटा कौन है जाए ये जो हमारा अच्छी visible range जो सातटा light अच्छी big bear बाघ निशो हनाला सेट्रे एडा कौन है जाए separate है जाए तो से कोची कोटा की basically बेसी deviate हुए. तो जारो wavelength कौन थी वो अधिका थी वो 400 नैनोमीटर 700 नैनोमीटर में जानचे violet और red जाए so red टा बेसी डायमीटर हो. So you can see here sorry least diameter पचार लो ना हाँ red हो. Okay, you can see here a beam of white light थोड़ा कौन हो चु least deviation सब लोग अधिक deviation होच कौन violet रो. Okay 400 नैनोमीटर 700 नैनोमीटर तर कौन हर frequency नहीं V ग्रुप स्टार्ट होची रेड आर जाए तो रेड रो बेसी हला वेवलेंथ least deviation होची question was asked least deviation only. Okay, I got this figure from internet only. So white light splits prism थोड़े पास ले कौन 7 कलर आछी
वी और आम फॉर्मूला याद मन रखता जोटा कि 400 नानोमीटर स्टार्ट करके 700 नानोमीटर जाए थाए वी आई बी जी पूर्व अल्ट्रावायलेट या इंफ्रारेड वी आई बी जी वाई ओ आर ओके तो रिमेंबर दिस थिंग तो बेसिकली रेड लाइट टा कोन होची लीस्ट डेविएशन होची मैक्सिमम डेविएशन होची वायलेट ओके so we'll check in the internet actually वेबलिंक में देखी तुम ना लाइट वेबलिंक स्पेक्ट्रम दासियो ना हम इटा ये बोला देखा दिया ओके बेसिकली एपड़ो वेबलिंक तो बढ़ छि बेसिकली ये कोन वेबलिंक तो बढ़ु छि विजिबल रेट रे बढ़ु छि बिकॉज़ एपड़ो कोन देखो डिक्रीजिंग वेबलिंक इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी ये तो बेटा अछि वायलेट थ्रू आछि तुम रेड जाए तुम कहली 400 700 नानोमीटर तो बेसिकली वेवलेंथ बेसी कार रेड रो अछि यार ये कम से देखो बड़ी बड़ी जाछ ने बाकी रेट कम क्वेश्चन कम बजातला क्वेश्चन बजातला कि लीस्ट डेविएशन कोटा हबो तो ऑल द रेड रो अछि अधिक वेवलेंथ डेविएशन कम होछि ओके higher wavelength the light which is more wavelength will deviate less okay and will have less dispersion when it passes through prism okay so this is the thing jahar basic wavelength thibo se less deviate hobo that's why the answer is red okay does deviation depend on wavelength of light the deviation of light depends on refraction therefore it also depends on the wavelength of light so this is it yes I wanted to mention about the telegram group we have after the whole video will finish then I will put the PDF in the this channel OPS exam revise with me you can join link I will provide in the video description section okay and we are a group chat of the open kar dechi jodi kichi genuine question tha you can ask in the group also okay so this is it so we'll stop here thank you so much Hare Krishna Jai Jagannath